हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोन गुलाब के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइक्लोन गुलाब। इन द पास्ट वी हैव स्टडीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइक्लोन्स ताउते, अम्फान, etc. So the topic cyclone is becoming really important for your preliminary and mains perspective. In prelims, geography से related question can be asked in cyclones. Right, what are tropical cyclones, anticyclones, the reasons behind the formation, and similar question can be asked in your mains examination as well, that is in the GS paper 1. मेंस में भी पेपर 1 में ज्योग्राफी सिलेबस होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, तो इसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ दे ओरिजिनेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, हाउ दे आर नेम्ड, कैसे इनको नाम दिया जाता है, ये सारे पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट व्हाट इज साइक्लोन गुलाब and why it has been named Gulab, which country named this cyclone Gulab, and then we will study in detail about the cyclone formation and different types of cyclone. इसका formation और इसके different types जो है उसको डिटेल में हम पेपर 1 GS पेपर 1 in mains के perspective से पढ़ेंगे. Okay, so make sure that you are ready with your notes register of geography so that you can take down the important points. Okay, let's get started without any delay. Before we start this lecture, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched on popular demand Special Price Week, wherein from 28th to 30th September 2021, all the prices of all the batches and courses on Unacademy Plus are reduced by 10%. And over and above this 10% reduction, you will get extra 10% discount if you use this code ARPITA10. So in total, for the next 2 days, you are going to get total 20% discount. Not 2 days, 3 days. 28th September, 29th September and 30th September. Next 3 days के लिए आपको Unacademy Plus पर अपने हर सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% Unacademy Plus देगा और बाकी का 10% आप इस कोड से ले सकते हो डिस्काउंट। एंड यू कैन सी इन द ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स व्हेन यू गो टू टेक कोचिंग्स, व्हाट दे डू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दे चार्ज 2 लाख रुपीज फॉर कोचिंग एक्सक्लूडिंग द ऑप्शनल। सेपरेटली ऑप्शनल की लोगे तो 50,000 उसके फीस लगती है, बट हियर prelims, mains plus optional till your and the test series and the books that we are providing, that we are delivering to your house, everything is just for rupees 40,095 rupees. 1 year ka if you are taking subscription, 46,740 rupees. And if you are taking iconic GS subscription or combo subscription, wherein you will get your personal mentor and one-on-one individual guidance, it's just for rupees 60,000. Plus you will get 10% discount by using this code. So this offer, this special price week, is just for 3 days, 28th September, 29th and 30th September. Make sure that you subscribe today. Hurry up. The courses, the links are given below in the description box. So cyclone Gulab is likely to hit the east coast of India. हमारा देखो पहले first of all direction याद रख लो. This is the north direction. I'll just draw it. This is north. This is south. This is over here west, this is over here east. ठीक है, so here in the picture also you can see in the east coast the cyclone Gulab is going to hit India. Okay, and it is formed in the Bay of Bengal region because it is coming from the east section. यहाँ पर आपका Bay of Bengal region होता है, तो यहीं से ये साइक्लोन इंडिया के, भारत के ईस्ट कोस्ट को हिट करने वाला है. एंड गुलाब, दिस नेम साइक्लोन गुलाब को, ये जो गुलाब का नाम है, इट वॉज सजेस्टेड बाय पाकिस्तान. ये किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था. So a new depression has formed over the east central Bay of Bengal, and this depression, ये जो depression बना है, this depression has intensified into a cyclone which is named as Cyclone Gulab. The cyclone affected the coast of South Odisha, North Andhra Pradesh. This is important. जो East Coast है वो North South Odisha and North Andhra Pradesh की areas को इसने hit किया है. And because of this, the areas in Odisha and Andhra Pradesh, they are witnessing very heavy rainfall. Okay. Now this particular case, this particular situation and event, it comes under the category of cyclonic storm. So according to the Indian Meteorological Department, cyclonic storm बन गया है इस एरिया में. ये पॉइंट आपको याद रखना है. एंड राइट नाउ वी नो द वेदर इज चेंजिंग, द क्लाइमेट इज ऑल्सो चेंजिंग. ये अभी मॉनसून का पीरियड चल रहा है, सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर इवेंट हैज बिकम रियली सीवियर. ओके,
Now, because of weak to moderate negative Indian Ocean dipole, equatorial Rossby waves, that is the natural planetary waves, they could have transferred a substantial, huge amount of energy to this system. That is why the cyclonic storm has been witnessed in Odisha and Andhra Pradesh. Okay, what kind of cyclone is Cyclone Gulab? First important point that you have to remember is it's a tropical cyclone, and this Gulab word means rose. Okay, this name to this cyclone has been given by Pakistan. Okay, ये point आपको याद रखना है. Now let us understand that how the cyclones are formed and what are the different kinds of cyclones. So when we talk about cyclones, we need to understand that this cyclone word comes from a Greek word called cyclos, which means coils of a snake. Okay, इस तरीके से होता है ना, बनता है cyclone. That is why it is known as, this has come from a Greek word called cyclos. And this word cyclone was, derived first by Henry Paddington. It was coined by Henry Paddington because the tropical storms in the Bay of Bengal and the Arabian Sea appeared like coiled serpents of the sea. That is why this name cyclone was taken from cyclos by Henry Paddington. ये point आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? Now cyclones are very rapid. Rapid means यहाँ पर rapid का मतलब क्या होता है? Very fast. Inward air circulation around a low pressure area. The air circulates in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere. Okay, point clear हो गया यहाँ पर? And they are accompanied usually by violent storms and bad weather. Now there are different types of cyclones, and the most famous kind of cyclone is known as the tropical cyclone. जो सबसे ज़्यादा famous kind of cyclone पाया जाता है ना, उसे हम tropical cyclone बोलते हैं. So what is a tropical cyclone? ये क्या होता है? So this is, write it down, it is a very intense circular storm. It is a very intense circular storm, and it originates where? Please write it down. This is important for prelims. It originates over the warm tropical oceans. जितने भी warm tropical oceans है ना, आप वहां देखोगे tropical cyclones बनते हैं. So यहाँ पर क्या पाया जाता है? Low pressure areas पाए जाते हैं. So remember this point for prelims. In the low pressure areas, the tropical cyclones are formed, and that is why we see very high winds. जब भी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वहां पर विंड्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं, एंड देन देयर इज वेरी हैवी रेन. सो दिस साइक्लोन गुलाब इज आल्सो अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. दैट इज व्हाई हैवी रेन इज गेटिंग विटनेस्ड इन दी ओडिशा रीजन एंड द आंध्र प्रदेश रीजन. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ साइक्लोन्स यूजुअली आर फॉर्म्ड ओवर स्लाइटली वार्म ओशन वाटर. ओके, ये पॉइंट याद रखना. एंड इट इज सेड दैट द पीरियड्स ऑफ अप्रैल टू मई and October to December, they are very favorable for cyclone formation. ठीक है, this is again important. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर एटलीस्ट 28 डिग्री सेल्सियस रहता है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए ना, दी एटलीस्ट टेम्परेचर शुड बी 28 डिग्री सेल्सियस. सो दैट कैन बी विटनेस्ड इन अप्रैल में एंड अक्टूबर दिसंबर मंथ. Now there is a concept of anticyclones also. So what is an anticyclone? ये क्या होता है? Anticyclone is the opposite of a cyclone. That means it has outward spiraling circulation. Cyclone is like this, inward circulation. Anticyclone is the outward circulation. ठीक है, इसमें क्या होता है? सर्कुलेशन आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है सर्कुलेशन, इनवर्ड नहीं होता, उल्टा रोटेट करेगा इस तरीके से, लाइक दिस. इट विल रोटेट लाइक दिस, क्योंकि बाहर की तरफ सर्कुलेशन हो रहा है. नॉर्मल साइक्लोन इज लाइक दिस, इनवर्ड रोटेशन, बट एंटी साइक्लोन में आउटवर्ड रोटेशन रहता है. ठीक है, एंड एंटी साइक्लोन्स विंड्स रोटेट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अराउंड द सेंटर ऑफ हाई. तो ये था आपका साइक्लोन गुलाब. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, द कॉन्सेप्ट अबाउट साइक्लोन्स एंड एवरीथिंग. दिस वाज all for today. Make sure that you take down the notes, and the class PDF will be uploaded on our Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease.